भीमा नदी के लिए कर रहे हैं, जितना भी उसको और उसके अंदर जो कलुषित हो रहा है ना पानी, और उसके लिए ना हम लोग कितना ही प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सब नदी में फेंक रहे हैं। और सभी लोग ना उसको हम लोग कम करना चाहिए, क्योंकि उससे नदी बहुत सारे से ना कम से वो पूरा प्लास्टिक की वजह से पूरा, और वहाँ पे जो नारियल छोड़ रहे हैं और कपड़े छोड़ रहे हैं, इन सबसे ना नदी पूरा गंदा हो रहा है। परिसर संरक्षण है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, Alimi Public School, and by Rich Tea, स्वाद में richness. हम 3 दिन से ये कैंपेन कर रहे हैं, और स्टार्टअप हमने जयवर्गी से किया था और गंगापुर, और यहाँ पे आज लास्ट है हमारा 3 डेज से ये जो परिसर के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इसका मेन टॉपिक क्या है बोले तो हम भीमा नदी के लिए कर रहे हैं, जितना भी उसको और उसके अंदर जो कलुषित हो रहा है ना पानी, और उसके लिए ना हम लोग कितना ही प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सब नदी में फेंक रहे हैं। और सभी लोग ना उसको हम लोग कम करना चाहिए, क्योंकि उससे नदी बहुत सारे से ना कम से वो पूरा प्लास्टिक की वजह से पूरा, और वहाँ पे जो नारियल छोड़ रहे हैं और कपड़े छोड़ रहे हैं, इन सबसे ना नदी पूरा गंदा हो रहा है। वही पानी हम लोग पी रहे हैं। इस भी कलबुर्गी में जो भी पानी पीता है वो तो भीमा नदी से ही आता है। ये सब लोग हम लोग समझने चाहिए कि पानी किधर से आ रहा है और वो कितना गंदा आ रहा है। ये सब हम लोग समझ के और हम लोग करना है क्या चाहिए बोले तो ये प्लास्टिक वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा कम करेंगे। और हमने हमारे लिए जो पूर्वजों ने झाड़ वगैरह लगाए हैं, और उसके लिए हम लोग अभी जी रहे हैं ना, अच्छा हवा ले रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, जो भी आगे वालों को भी ये सब मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ये करेंगे, आज ज्यादा से ज्यादा हम लोग झाड़ लगाएंगे, उसको हम पोषण करेंगे, अच्छे से बढ़ाएंगे। आगे के लोगों को भी मदद होना चाहिए, जो भी हमारे बच्चे आने वाले हैं, जो उनके लिए भी अच्छा हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए। बोलना चाहती हूँ हम सब यूथ मिल के अच्छे से पेड़ लगाएंगे, उसको अच्छा से पोषण करेंगे, बोलना चाहती हूँ। ನಾವು ಈ ಯೋಧನಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಗಳಿಂದ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಾಗೃತಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು। ಇವಾಗ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ। ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯುವ ಜನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾಪುರ 2 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೋಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಈಡಿದೆ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ। ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನರು ಹಾಗೆ ಯೂತ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಿನ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ। ಪರಿಸರವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ನಾವು ಯುವ ಜನರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। Thank you. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, Alimi Public School, and by Rich Tea, स्वाद में richness.